gravitation. And in gravitation, let's see Newton's law of gravitation. What Newton says, if we have two point masses, m1 and m2. Look what I said, point masses, m1 and m2, these are point masses. If they are separated by a distance of r, then Newton says that force on m2 by m1, F. What is F? Force on m2 by m1. Force on m2 by m1. According to Newton, this force is proportional to m1, is proportional to m2, and at the same time is inversely proportional to square of this distance between m1 and m2. And because of this law is also known as inverse square law. Inverse square law. What Newton found, that force on m2 coming from m1 is directly proportional to m1, which means अगर आपने m1 को डबल किया तो force डबल हो जाएगा. Similarly, force is also proportional to m2. अगर आप m2 डबल करेंगे तब भी force डबल होगा, but is inversely proportional to separation between m1 and m2. That means अगर आपने distance डबल किया, then force will become 1/4, and therefore this is what inverse square law. Now, if you group these three things, then this force is proportional to m1, m2 upon r square. And we know that if we have to remove this proportionality sign, then we need to use some constant. This constant is capital G, which makes it G m1 m2 upon r square. What is G? This is a universal constant. Universal constant means ऐसा नहीं है कि केवल अर्थ पर या कोई specific masses के लिए. Anywhere in the universe, if you take two masses and you find force between these two masses, then this constant is not going to change. For example, G is 9.8. It's not a universal constant. In fact, it's not even constant on the surface of Earth. At different points on the surface of Earth, G is different. And then as you go up, G changes. We'll see that in this chapter itself. What is universal constant? Something which remains what?
constant everywhere, and its value is 6.6 into 10 to the power minus 11. You can see the unit of this G, which is coming what, Newton into meter square divided by kg square. Its unit is what? Newton into meter square divided by kg square. Now, suppose I give you information like this, that M1 is greater than what? M2. And then I ask you this is M1, this is M2, force on M2 coming from F1, let's say this is F2, force on M1 by M2 is F1. M1 इसने कितना फोर्स लगाया? F2. M2 इसने कितना फोर्स लगाया? F1. It's given that M1 is greater than M2. Questions किस तरह से पूछे जाते हैं? Which one is correct? F1 greater than F2 or F2 greater than F1? It's like asking this, that Earth, and take this marker. Earth is pulling this marker down and this marker is pulling Earth up. किसका फोर्स किस पर ज्यादा है? अर्थ का मार्कर पर या मार्कर का अर्थ पर? They ask these type of questions and normally आदमी इन दोनों ऑप्शंस में ही कंफ्यूज रहता है. कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस तरह की चीजों को सोचता रहता है. But then Newton, he says that follow his third rule which we developed in laws of motion. And what that law says? It says for every action there is an equal and opposite reaction, and therefore correct answer is what? F1 is equal to what? F2. This is the correct one. These two options are wrong. Common silly mistake है. ज़्यादातर लोगों को लगता है M1 is greater than M2, इसलिए M1 का जो फोर्स है F2 ये ज्यादा होगा. M1 ने M2 पर जो फोर्स ट्रांसफर किया ये ज्यादा होगा. But remember that for every action you got equal and opposite reaction, and therefore F1 is equal to F2. At the same time थोड़ा सा इसका लेवल अगर उठाएं इतने से पार्ट का, then they can ask you things like these also. F1 equals to F2. F1 equals to minus of F2. Which one is correct? This says magnitudes are same and their directions are also same. But you can see the directions are not same, and therefore this option is wrong. What does it say? They are having equal magnitudes and direction of F1 is opposite to that of F2. वही दिख भी रहा है. Action and reaction, their magnitudes are equal but they act in opposite directions, and therefore if they give you an option in vector form, then remember this is the correct one. If they give you option in terms of magnitude, then this part is correct. F1 equals to F2. If somebody writes here F1 as minus of F2, and when we say F1, F2, we are interested only in the magnitude, then this presentation is also not correct. Magnitude wise they are same, direction wise they are opposite.
It says something like this. Suppose force on M2 is 10, force on M1 is 10. Then what is correct? 10 equals to 10. But this option says 10 equals to minus 10, which is not correct and therefore wrong. Now, इतनी पूरी इंफॉर्मेशन में सबसे काम की चीज जो आपको याद रखनी है that this law in this form f equals to g m1 m2 upon r square is valid only if m1 and m2 both are what? Point masses. Write down this as an important statement. F equals to g m1 m2 upon r square. F equals to g m1 m2 upon r square should be used only if both m1 and m2 are point masses. Both m1 and m2 are point masses. क्या मतलब है कहने का? इधर देखना. Let's say we have got two markers. If I ask you that separation between these two markers is doubled, then what happens to force? तो आदमी क्या करता है? सीधे यहाँ आता है. सर ने R डबल कर दिया. इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4. नहीं. क्यों नहीं होगा? Because these two markers, they are not point masses. You can call them cylindrical masses. These two are what? Cylinders. And therefore, for these two cylinders, we cannot use this formula, which is g m1 m2 upon r square, and this format is booked only for point masses. तो फिर इस तरह की line masses के लिए हम क्या करते हैं? We'll see that later. This marker is made up of several points. This marker is also made up of several points. इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनका इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर वेक्टर फॉर्म में ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप कर लो with the help of integration. This is a difficult task. फिर भी theme is that we cannot use this formula for these two things. Note down this much. Let's see vector form of Newton's law. So far we have seen this m1 and m2, two point masses. They attract each other with a force given by g m1 m2 upon r square. But force is a vector, and we are interested in its vector form. A vector has two things. One is magnitude, and the other thing is direction. Magnitude and direction. Magnitude is this g m1 m2 upon r square. Direction. For direction, you know that we use unit vectors. If we need direction, we use what? Unit vectors. This is the magnitude. What is the unit vector? For that, this m1
Let's say this position is origin. This is origin. Let's say origin is represented by O. Position of M2, let's call it P. Origin is O and M2 is at point P. From O to P, if I join P with O and continue like this, then this direction is called R cap. Let's say थोड़ी देर के लिए हमने बोला ये x एक्सिस है. अगर ये x एक्सिस होती तो फिर इस डायरेक्शन का नाम क्या होता? I कैप. लेकिन जब हम M1 और M2 इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब ये है that M1, if it is at this position, then M2 can be at this position. Now, if you wanted to say that this is I cap, चलो काम चल जाएगा. But what about this? And therefore, what we have defined is, since separation between M1 and M2 is what? R. We have defined a directional vector, which is unit vector, which points away from M1. Since it aligns with R, we have given it a special name R cap. R cap is your unit vector. What is the direction of R cap? Away from M1. Away from M1. Like this. Now, in this situation, this R cap you can say is parallel to what? I cap. But to keep things generalized, we will use what? R cap. Again, if somebody takes R cap like this, then R cap is nothing but I cap. If somebody takes R cap like this, then R cap is nothing but J cap. Similarly, this R cap will be what? K cap. A generalized situation is given by this. What is R cap? Unit vector. A vector whose magnitude is what? 1 and is used only for direction. What is the direction of this unit vector? Away from M1. Now, magnitude पता है अपने को, क्या चाहिए? Direction. What is the direction of force? Force on M2 coming from M1 is pointing towards M1. That means opposite to what? R cap. Opposite to R cap. And therefore we can write it as minus of R cap. क्या बता रहा है ये सिस्टम? फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना है और फोर्स का डायरेक्शन आर कैप वेक्टर के डायरेक्शन के ऑपोजिट है. अब ये जो फॉर्मेट निकल कर आया, इस फॉर्मेट को हम किस तरह से और प्रेजेंट कर सकते हैं वो चीज देखना. हाउ डू वी जनरेट यूनिट वेक्टर्स? किसी भी वेक्टर को अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड गिव्स यू व्हाट? अ यूनिट वेक्टर. ये जो वेक्टर है न्यूमरेटर, इसका मैग्नीट्यूड है r, डिनोमिनेटर इज व्हाट? r. What is r upon r? 1. And therefore these are called what? Unit vectors. This is
in simplified form is like this. And therefore r cap is r vector divided by r, which makes this whole thing something like this. Minus of g m1 m2 upon r square. Now look at this, r cap. What is r cap? R vector divided by r. R vector divided by r, which means now f can be represented in this form. Minus of g m1 m2 r vector whole divided by r cube. This is vector representation of न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये पार्ट भी करेक्ट है, ये पार्ट भी करेक्ट है. माइनस ऑफ जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप. दिस इज माइनस ऑफ जी एम वन एम टू आर कैप divided by r square. Force in vector form can be represented by this format or this format. दोनों फॉर्मेट काम के हैं, एक ही चीज है. इस फॉर्मेट में लोग कंफ्यूज कहां हो जाते हैं? उनको लगता है फोर्स इज नाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेपरेशन बिटवीन m1 एंड m2. ऐसा है नहीं. लुक एट दिस. दिस न्यूमरेटर हैज गॉट r वेक्टर. इस पोर्शन का मैग्नीट्यूड कितना है? r. एंड देयरफॉर r अपॉन r क्यूब गिव्स यू व्हाट? r स्क्वायर. इसका मतलब फोर्स अभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर वही चल रहा है. इस फॉर्मेट में ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज लुक एट दिस आर कैप. दिस आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर एंड देयरफॉर दिस पोर्शन ओनली एज व्हाट? मैग्नीट्यूड 1. बाकी की चीज डिनोमिनेटर में एज आर स्क्वायर इज प्रेजेंट. Now, अगर आर कैप इन सारी चीजों से आपको कंफ्यूजन हो तो एक सिंपल सा वर्जन है जिसमें आप इस तरह के वेक्टर साइंस को जनरेट कर सकते हो कि आप कंफ्यूज हो गए. व्हाट वाज आर, द डायरेक्शन ऑफ आर कैप एंड ऑल. तो हमने क्या किया? हमने बोला लेट्स से दिस इज m1 and let's say its position is what? O. m2, its position is what? P. m1 and m2. m1 is at O, m2 is at P. आपसे पूछा गया find out force on m2 coming from m1. Force on m2 coming from m1. What is that? Force on m2 from m1. On m2 coming from m1, and we need to write this thing in vector form. आपने क्या बोला? What is force? Magnitude and direction. Vector. What is the magnitude? G m1 m2 upon. What is the separation between m1 and m2? Can write it as OP, square of it. Now, what is the direction of this force? m1 m2 पर जो force लगाएगा, its direction is this. What is the direction? आपने बोला P to
O. What is the direction? P to O. If it's P to O, then you can represent it like this. P to O is nothing but PO cap. That's your unit vector. PO cap. PO cap. What is PO cap? P to O unit vector. Now, what is PO cap and all? How do you find these values of PO cap? इसके लिए हम वेक्टर्स में क्या क्या चीजें सीख चुके हैं. Suppose somebody gives us a vector AB. Then I hope you remember AB is what? Position vector of B minus position vector of A. That's how you define AB. What is AB? Position vector of B minus position vector of A. Which means अगर किसी ने हमसे बोला PO cap, तो आप क्या करेंगे? आपने बोला PO cap is what? PO cap is PO vector divided by its magnitude, which is simply what? PO magnitude part. What about PO vector? अगर आपको PO वेक्टर फाइंड करना है तो आपने क्या किया? PO vector is what? Look at this. AB is what? Position vector of B minus position vector of A, which means PO vector is what? Position vector of O minus position vector of P. That's how you can develop PO vector. Once you found PO vector divided by its own magnitude will give you what? PO cap. This PO cap you can use right here. इतना नोट करिए, एक एग्जाम्पल देखेंगे, उससे पूरी की पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी. नोट डाउन दिस मच. ये साइड इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग वेक्टर्स एंड ऑल, साइड में शो करना है आपको. नोट डाउन एवरीथिंग. Let's take an example जिससे कि पूरी की पूरी कहानी क्लियर हो सके. देखो एक 2 kg point mass and a 3 kg point mass. They are given 2 kg and 3 kg. Question says that 2 kg it is located at 5, 4, 1 x, y and z coordinates. 3 kg is located at 7, 3, 8 x, y and z coordinates. And we need what? Force between 2 and 3 kg. एक तो magnitude. And force on 3 kg coming from 2 kg in vector form. अब अगर केवल magnitude पूछा हो तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है. What is force? G m1 m2 upon r square. How do you find r? R is separation between 2 and 3. Coordinates पता है,
हर आदमी डिस्टेंस फार्मूला यूज करना जानता है। तो अगर आपसे आर पूछा गया होता तो आपने सीधा सीधा क्या करना था, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, स्क्वायर्स एंड देन रूट। तो हम क्या करते, आर फाइंड करने के लिए 7 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 8 minus 1 that's how you can find what r पता है, g पता है, m1 पता है, m2 पता है, we can easily calculate what magnitude। ये हो गया हमारा magnitude version। But suppose we need force on 3 kg coming from 2 kg in vector form। तो अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो हमने बोला ठीक है, force on 3 kg by 2 kg, we need this force। let's say this point is A, this point is B। कोई जरूरी नहीं कि आप O and P लें, आपकी मर्जी, A B जो आपने लेना है। this is A, this is B। what is force? G m1 m2 upon distance between A and B। what is that? AB, square of that। what is the direction of force? on 3 kg by 2 kg, on 3 by 2, this is the direction। what is this direction? B to A, B to A, like this direction is B to A। and what is B to A? B to A is B A cap, B A cap। केवल क्या फाइंड करना रह गया है? बी ए कैप। और यू फाइंड बी ए कैप? बी ए कैप की कहानी क्या है भाई? बी ए कैप इज व्हाट? बी ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर। नाउ दिस इज बी A vector divided by this BA can also be written as AB। It doesn't matter। BA magnitude, BA और AB बात एक ही है। BA vector and AB vector they are not same। Magnitude wise जो BA है वही क्या होगा? AB होगा। Magnitude wise जो AB है वही बी ए है, मैग्नीट्यूड। नाउ अपने को फाइंड करना है बी ए वेक्टर। व्हाट इज बी ए वेक्टर? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। What is BA vector? Position vector of जो बाद में आएगा माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B जो पहले आएगा। That's how you define position vector, BA vector। Now what is position vector of A? Position vector of A is 5 4 1। What is that? 5 I cap plus 4 J cap plus 1 K cap minus position vector of B। Position vector of B is what? 7 I cap
plus 3j cap plus 8k cap. This is your BA vector. Which means, what is this BA vector? This BA vector is coming. How do you handle this thing? I, J, and K. 5i minus 7i. Look here. What is 5 minus 7? Minus of 2 I cap. Next, 4 minus 3. 4 minus 3 is simply j cap. Then 1 minus 8. 1 minus 8 is minus of 7 k cap. अगर वेक्टर इस फॉर्म में है तो उसका मैग्नीट्यूड BA, which I told you, you can write as BA or you can write it as what? AB. बात एक ही है. Is given by this root over coefficient of I, square of that 4, coefficient of J, square of that 1, coefficient of K, square of that 49. This is coming root over 52. What is BA? BA, which is what? AB. And technically इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? R. Separation between these two masses. R. That's how R you could obtain directly using what? Distance formula. अगर केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता तो जो हमने चीज की थी वेक्टर फॉर्म भी अल्टीमेटली वहीं पहुंच रहा है. लेकिन वेक्टर फॉर्म में हम क्या चाहते हैं? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. लेट्स कंप्लीट दैट. व्हाट इज फोर्स कमिंग? G m1 2 into 3 divided by AB square. What is AB? AB is coming what? Root over 52. Square of that is what? 52. Multiplied by what? Unit vector BA cap. How do you get BA cap? BA cap is vector BA divided by its magnitude. What is vector BA? Vector BA is this minus 2i plus j minus 7k. Minus 2i plus j minus of 7k cap whole divided by magnitude of BA vector. That magnitude is what? Root over 52. Root over 52. Now, हमारा आंसर कंप्लीट है. फोर्स अपने को वेक्टर फॉर्म में मिल चुका है, लेकिन यहां पर इस चीज को फिर से समझना. हमने थोड़ी देर पहले से डिस्कस किया हुआ है. क्या चीज है? दिस होल थिंग इज व्हाट? G into 6 multiplied by minus of 2i cap plus j cap minus of 7k cap divided by 52 to the power 3 by 2. 52 to the power 1 and 52 to the power half. It makes it what? 52 to the power 3 by 2. You can simplify this thing in this form. लेकिन जब आप ये चीज देख रहे हो तो 6g divided by 52 to the power 3 by 2 ये मैग्नीट्यूड नहीं है. क्योंकि आपने इस रूट 52 को एडिशनली क्या किया हुआ है? मल्टीप्लाई. इस पोर्शन में दिस मच पार्ट G m1 m2 upon AB square, G m1 m2 upon root 52 square.
This much part is what your magnitude. What is the directional part? ये रहा directional part. What is direction? Unit vector. Unit vector कैसे मिलता है? Vector divided by its own magnitude. तो ये √52 जब आप इसको √52 से डिवाइड करते हो तब जाकर ये जो पूरी चीज दिख रही है, look here, ये जो पूरी चीज दिख रही है इस पोर्शन का मैग्नीट्यूड क्या है? 1. This whole thing is your unit vector. अब अपने को वेक्टर्स जब रिप्रेजेंट करने होते हैं हम क्या करते हैं? I, J and K, and therefore what finally we did, हमने इस पूरी चीज को ग्रुप कर दिया, ये आ गया अपना फोर्स कंप्लीट इन वेक्टर फॉर्म. कोई आपको ये सोचने की जरूरत नहीं थी क्या होता है आर कैप, कहां लेंगे माइनस आर कैप, थिंग्स लाइक दैट. नहीं, आपने क्या करना था? फोर्स किस पर पूछा गया है? बी पर. कहां से आने वाला? ए से. आपने क्या किया? मैग्नीट्यूड लिख दिया. व्हाट इज मैग्नीट्यूड? gm1 m2 अपॉन डिस्टेंस. अब क्या सोचना था? डायरेक्शन. व्हाट इज डायरेक्शन? ये सोच लो, ए से बी या बी से ए. 2 kg is pulling 3 kg towards itself and therefore that direction is what? B to A. B to A. This B to A in vectors is called BA cap. इतना सा याद रखना. Note down this. Now let's see some examples where vector form of force is required. Not necessarily in terms of I, J and K. If you wish, you can do that also. But देखना है यहाँ पर. Question is that we have got 3 identical masses M, M and M. And they are placed on the vertices of an equilateral triangle of side length L. That's your equilateral triangle. Question is, find out force on this M coming from these two ends. Force on this point mass coming from these 2 point masses. अब यहां पर क्या करना? वीडियो पॉज करना, खुद फाइंड करने की कोशिश करना. अगर नहीं हो पाए, कम बैक एंड सी द हिंट एंड देन उस हिंट के बाद फिर से कोशिश करना फाइंड करने की. कुछ भी नहीं हो पाए, देन सी द कंप्लीट सॉल्यूशन. अब क्या करना है अपने को? M and M, इस पर फोर्स, हमने क्या बोला? This M is going to attract this M in this direction with a force of F. This M is also going to attract this M towards itself with same magnitude of force F. Well, what is F? You can see F is G M square upon L square. This F is also what? G M square upon L square. The magnitudes. M इसने अपनी तरफ खींचा, इस M ने भी अपनी तरफ खींचा. अब आपसे पूछा गया फाइंड आउट टोटल फोर्स. इफ आई आस्क यू टोटल फोर्स, इट्स मैग्नीट्यूड F टोटल, तो कई लोग क्या करते हैं? they do this F plus F. What is F plus F? 2F. And then they say that therefore answer is 2
gm square upon L square. But I hope you know that this whole thing is wrong because force is a vector और वेक्टर्स में आप इस तरह से चीजों को ऐड नहीं कर सकते. अगर वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं then only this type of thing is allowed. If vectors are pointing in different directions, then you know that we do something like this. एक वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर है B. An angle between these two vectors is theta. If I ask you magnitude of A plus B, then you know that this is root over A square plus B square plus 2AB cos of theta. That's how you get the magnitude. Which means this f and this f. अगर मुझे इन दोनों का f total find करना है, f total, then तरीका क्या है? What is A? Magnitude of first vector. B. Magnitude of second vector. दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है? सेम. This whole thing is an equilateral triangle, which means इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है, that is what? 60 degrees. And therefore, how do you find magnitude of total force? First vector, its magnitude, square of that. Second vector, magnitude, square of that, plus 2f cos of angle between these two vectors, which is what? 60 degrees. What is cos 60? 1 by 2. 1 by 2, that makes it what? Half and 2 cancelled. This whole thing is 3f square. Cos 60 is 1 by 2, 2 and 2 gone, f square, that's coming root 3f square. And therefore, answer is root 3f or root 3 times, what's the value of f? gm square upon L square. That's your f total. अब इस सिचुएशन में अगर किसी ने आपसे पूछा होता what is f total, तो आप इजी वे में क्या कर सकते थे? Especially for this question, magnitude gm square upon L square. Now look at this figure. Since these two are identical, same magnitude forces, F and F, if they are having same magnitude, then I hope you can visualize under these two forces, this M will experience a total force in this direction, exactly in the middle of these two forces. Exactly in the middle. Now what is this? What is this? This is minus of j cap. बिना किसी लेंदी आई कैप, जे कैप, के कैप टेक्निक के हमने क्या फाइंड कर दिया? वेक्टर फॉर्म. मैग्नीट्यूड फॉर्मूला यूज किया कमिंग फ्रॉम दिस, एंड देन सिंपल लॉजिक क्या बोलता है? डायरेक्शन ऑफ दीज टू आफ्टर यू टेक द रिजल्टेंट इज दिस, व्हिच इज व्हाट? माइनस ऑफ जे कैप. इतना पार्ट नोट करना. अब इसके बाद यहां पर इस एफ टोटल को फाइंड करने के लिए हम एक सेकेंड अप्रोच भी यूज कर सकते हैं. मैं उसका आइडिया आपको दे रहा हूं. आइडिया सुनने के बाद वीडियो पॉज करना एंड देन ट्राई करना उसको. जब भी फोर्सेस किसी एंगल पर दिखते हैं तो हम उनको रिजॉल्व करते हैं along x axis and along y axis. Try to resolve these forces
and then find out F total. Pause the video and then come back and see the solution. इस सेटअप को यहां देखना, हमारे दोनों फोर्सेस इस तरह से लग रहे हैं, this and this, F, F, and we need resultant of these two forces. हमने क्या किया, that's your x-axis, this is your y-axis. This angle is 30. This angle is also 30. Total is 60, half 30, 30. And how do we take components? F. जिस तरफ एंगल होता है, उस तरफ का कंपोनेंट बनता है cos. The other component is what? Sin. कुछ लोग ये चीज दिमाग में रख लेते हैं that horizontal is cos. नहीं, जिस तरफ एंगल होगा that is cos. Other one is what? Sin. Similarly, resolve this F. इस F का downward component is what? F cos 30, and this side component is what? F sin 30. Now look at this mass. This mass. This M is being pulled in this direction with F sin 30. At the same time, it's being pulled in this direction with F sin 30. Which means this F sin 30 will cancel out this F sin 30. Giving us what? A downward force. What is that downward force? That downward force is what? F cos 30 plus F cos 30. That is 2F cos 30. ये दोनों cancel हो गए, बचे हैं ये. Now what's the value of cos 30? Cos 30 is root 3 by 2. That gives us root 3F. Root 3F. At the same time, we can see that direction is what? Downwards, and therefore F total becomes root 3F. What is the direction? Minus object. That's how you can use the second approach. Resolve along the x-axis and y-axis. अलग अलग एक्सिस को अलग अलग हैंडल करो, x अलग, y अलग. Note down everything. Now suppose in the previous example this mass is 2m. बाकी कहानी same, m, 2m. We again need total force on this end. Again, pause the video and go for it. अब अगर अपने को ये दिया हुआ है that this mass is 2m, तो फिर पहली चीज, this thing will not be m square. This thing will be what? M multiplied by 2m. M multiplied by 2m means this is 2g m square upon L square. Which means if you say that F is gm square upon L square, then 2gm square upon L square should be called 2f. Easy चीज है, ये f है और ये क्या हो गया? 2f. Now somebody looking for magnitude only can handle this question very easily. How do you find magnitude? F total root over magnitude of first vector f square, second vector 2f.
Look at this interesting thing also. Instead of taking gm square upon L square and using gm square upon L square directly, we'll make this whole thing big, cumbersome. इसलिए आगे से क्या किया करो, gm square upon L square, this whole thing in short is what f. Write down f. This 2 gm square upon L square therefore became what? 2f, like this, plus 2f into 2f, कुछ हो जाए, इक्विलैटरल ट्राइंगल है इसलिए अभी भी एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या बना हुआ है, 60 degrees. This gives us f total as f square plus 4f square cos 60 half cancelled. This is coming 2f square, which is what, 4 to 6 17, that is root 7f or root 7 gm square upon L square. केवल मैग्नीट्यूड निकालना होता, इतना सा काम है. लेकिन इस बार अगर कोई आपसे पूछता कि व्हाट इज द डायरेक्शन, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते थे कि एग्जैक्टली बीच में. नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल. क्यों? दिस इज व्हाट 2f, दिस इज व्हाट f. जो नेट फोर्स होगा, दैट नेट फोर्स will be towards this 2f, larger magnitude, and therefore net force will be towards this 2f. How do we decide that? Let's go for the second method. Resolve these vectors, write them down in terms of I cap and j cap, चीजें हो जाएंगी. तो सेकंड मेथड क्या बोलता है? सेकंड मेथड ने बोला कि भाई एक तो ये 2f था, this is f, and then draw these axis system. This is 30, this is also 30, 2f, this component is 2f cos 30, this component is 2f sin 30. This f, its downward component is f cos 30, and this component is f sin 30. यहां क्या रखा हुआ है भाई, हमारा पॉइंट मास m. पिछले एग्जाम्पल में क्या हुआ था, 2f sin 30, इसने f sin 30 को क्या कर दिया था, f sin 30 ने f sin 30 को क्या कर दिया था, कैंसिल. लेकिन इस बार कंप्लीट कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, एंड देयरफॉर this whole setup is now equivalent to this. On this m we have a force in this direction, 2f sin 30 minus f sin 30. What is left? F sin 30. F, 2f. What is left? F. What about this? This is 2f plus f, 3f cos 30. f sin 30, 3f cos 30. अपने को x component दिख गया है, y component दिख गया है, and how do you find total force? टोटल फोर्स फाइंड करने का तरीका क्या होता है? और डू वी गो फॉर टोटल फोर्स? दिस इज 3f cos 30, दिस इज f sin 30. अगर अपने को x कंपोनेंट और y कंपोनेंट पता है तो रिजल्टेंट फाइंड करने का तरीका क्या होता है? दोनों
कंपोनेंट से एक रेक्टेंगल कंप्लीट करो and then join this diagonal and put this arrowhead. Don't forget to put this arrowhead. This blue vector is F total. This blue vector is what? F total. What is length of this? Very easy. Square, square. अगर F total चाहिए तो वो क्या आएगा? Root over F sin 30. What is F sin 30? F by 2 whole square plus 3F cos 30. What is 3F cos 30? 3F cos 30 root 3 by 2 whole square. X component square of that. Y component square of that. That's how we get what? F total. This is coming what? Root over F square upon 4 plus this is what? 9 into 3, 27. 27 F square upon 4, which is what? 27, 28 divided by 4 F square or root 7F. Same answer, root 7F. अगर केवल मैग्नीट्यूड पूछा होता, दिस इज द बेटर वर्जन. लेकिन अगर एफ टोटल वेक्टर फॉर्म में पूछा हुआ है तब हमें यहां आना पड़ता. कैसे? इधर देखना, लास्ट लाइन एफ टोटल को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए. व्हाट इज एफ टोटल इन वेक्टर फॉर्म? दिस एफ टोटल हैज एफ साइन 30 pointing in this direction. What is this direction? I cap. हमने यहां पर क्या लिखा? F sin 30 I cap. Then 3F cos 30 is pointing downwards. Downward means 3F sin 30 3F cos 30 3F cos 30 किस तरफ? Minus of J cap. That's your vector form of the total force. You can simplify it. F पता है अपने को. What is F? G M square upon L square. Take it common. Sin 30 1 by 2. That gives us I cap divided by 2. F is out. Sin 30 I cap by 2 minus because of this 3 cos 30 3 root 3 divided by 2. This is your F total in vector form. अलग अलग सिचुएशन को किस तरह से संभालना है. अगर आपको कभी ये समझ में नहीं आए कि नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? जितने भी वेक्टर्स हैं एक्स और वाई में रिजॉल्व करो. एक्स को अलग से हैंडल करो, वाई को अलग से हैंडल करो एंड देन इस तरह के फाइनल सेटअप पर पहुंचो जहां पर चीजें एक्स और वाई में बची हुई हो. फाइनली write down the complete vector form: magnitude, unit vector, magnitude, unit vector, using this thing. Note down this. Let's see this next example. This time
we are being given a square of side length L and four identical masses M, 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 and M. They are placed at these four corners. The square of side length L. We need total force on this end coming from these three masses M, M, M. This is stage पर वीडियो पॉज करो, go for magnitude part. अगर पॉसिबल हो तो वेक्टर फॉर्म को भी रिप्रेजेंट करना, बट एटलीस्ट मैग्नीट्यूड पार्ट आपको कैलकुलेट करना है. And then you can come back and see the solution. Now, किस तरह से फोर्स फाइंड करना है? जितने भी पॉइंट मासेस इस फोर्थ पॉइंट मास पर फोर्स लगा रहे हैं, उन सारे फोर्सेस को इस फिगर में ड्रॉ करो. तो हमने बोला this M is going to pull this M in this direction towards itself with what? Magnitude F. What is F? G M square upon L square. Similarly, this M is going to pull this M towards itself with same magnitude F. You can see that separation is what? L. Separation is what? L. Now, this third one is going to pull this M towards itself with a force of what? G M square upon what is the length of diagonal? Root 2L. L, L, this is what? Root 2L. Square of that will give you 2L square. Separation is what? Root 2L. Square of that 2L square. Which means this third force, it should be written as F divided by 2. This is F, this is F. Third force is coming is what? F by 2. तो हमारी जो इस पूरे सेटअप में कहानी बनकर आई, वो क्या बनकर आई है? On this mass, we have got a force in this direction. We have a force in this direction. And we have a force in this direction, F by 2. And we are looking for resultant of these three forces. अब अगर आपसे कुछ नहीं हुआ था तो इस जगह पर पहुंचकर वीडियो पॉज करना and then go for F total. इस पूरे सेटअप को हम किस तरह से विजुलाइज करेंगे? लोगों को लगता है तीन तीन फोर्सेस हैं, अब क्या किया जाए? लेकिन ये सिस्टम बड़ा ही इजी बना हुआ है. क्यों इजी बना हुआ है? बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दैट स्क्वायर्स डायगोनल, it makes an angle of 45 degrees from these two sides, which is what? Which gives us this advantage. Look at this force and this force. थोड़ी देर के लिए इस F by 2 को भूल जाते हैं. अगर केवल इन दोनों F की बात की होती हमने, forget about this F by 2. This is F. This is F. अगर मैंने आपसे पूछा होता कि इन दोनों F का रिजल्टेंट क्या होगा, तो आप क्या करते? आप ये रेक्टेंगल कंप्लीट करते. You join this diagonal and then you say what? This is F, this is F. What is magnitude of this thing? Root over F square plus F square. Simple सी कहानी. F square plus F square. Magnitude of these two
is this, which is what? Root 2f. This is f, this is f. They both are identical magnitude wise. इसका मतलब आपको पता है that this angle is what? 45 degrees. इसका फायदा क्या हुआ? हमने देखा कि ये दोनों जो है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है. किस डायरेक्शन में? In the direction of what? F by 2. Which means this whole thing is equivalent to what? हमारे पास इस तरफ एक फोर्स था पहले से, कितना? F by 2. Then ये जो दो फोर्सेस थे, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आया? रूट 2f. और ये भी कहां पॉइंट कर रहा है? इन दिस डायरेक्शन इटसेल्फ, क्योंकि ये दोनों किस एंगल पर हैं? 45 डिग्रीज. व्हाट इज दिस फोर्स? दिस इज योर रूट 2f. This f and this f, their resultant is also pointing in this direction. This and this, as they are pointing in the same direction, you can directly go for f total as what? Root 2f plus f by 2. That's the answer. मैग्नीट्यूड पूछा होता तो इतना निकल कर आता. क्या निकल कर आया? दिस प्लस दिस. डायरेक्टली ऐड क्यों हो पाएंगे? क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन क्या बना हुआ है? सेम बना हुआ है. ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड वर्जन. अगर इसी में आप इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, अगेन चीजें डिफिकल्ट नहीं है. दिस एफ is already pointing along x-axis. This one along that y-axis. बचाइए. इस थर्ड से बात करते हैं. थर्ड से बात करने के लिए हमने क्या बोला? This third force, which is F by 2, this is F by 2, it makes an angle of 45 degrees from this side, and therefore ये जो F by 2 है, इसका इस तरफ का कंपोनेंट क्या आएगा? F by 2 cos 45. What is cos 45? 1 by root 2. Similarly, इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा F by 2. This is cos, this is sin. But cos 45 and sin 45, they both are same. And therefore, this is also coming what? 1 by root 2. Which means, ये जो सेटअप है हमारा, this whole setup is nothing but this. इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है? F. That's your F. इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है? F. And then इस तरफ जो फोर्स था वो कितना था? F by 2. इस F by 2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बना हुआ है? F upon 2 root 2, which means अपने को इस डायरेक्शन में क्या और मिल चुका है? F upon 2 root 2. Similarly, इस F by 2 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या था? F by 2 root 2. ये भी हमने यहां दिखा दिया, F upon 2 root 2. तो जैसे हमने इस फोर्स को रिजॉल्व किया, फिर पूरी चीज को सुपर इम्पोज कर दिया, वी गॉट दिस फिगर. दिस इज, इफ आई आस्क यू व्हाट इज F टोटल नाउ, तो बार बार हमने इस तरह की चीज कर ली है. व्हाट इज दिस? F प्लस F अपॉन 2 root 2. F प्लस F अपॉन 2 root 2. ये किस डायरेक्शन में है? ये किस डायरेक्शन में है? एंड let's simplify this. Instead of
कैरिंग ऑल दीज बिग नंबर्स। हम फिर से जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है कि चीजों को जितना छोटा बना सकते हैं, सही बाद में जाकर उनकी वैल्यूज को हमने पुट करना है सीधा। हमने बोला दिस होल थिंग इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? देयर इज अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, दैट इज व्हाट? F dash. What is F dash? F dash is sum of F and F upon 2 root 2. Similarly, हमारे पास ये जो डाउनवर्ड फोर्स है, this is also what? F dash. F plus F upon 2 root 2. F plus F upon 2 root 2. इतने बड़े बड़े नंबर लेने की जगह हमने F dash में कन्वर्ट कर दिया। ये जो F dash और F dash हैं, इनकी वजह से जो टोटल फोर्स आएगा, क्या तरीका है अपने पास? Complete the rectangle, join the diagonal, put this arrowhead. ये जो arrowhead है, this vector is your F total. ये जो F total है, इस F total को हमने क्या बना दिया? This F total is now what? F dash is pointing towards minus I cap. F dash किधर? माइनस आई कैप। देन F dash किधर? माइनस J कैप। F dash किधर? माइनस ऑफ J कैप। which gives us total force as what? F dash common inside is what? Minus of I cap minus of J cap. And what's the value of F dash? F dash आपको पता है. What is F dash? F dash is F plus F upon 2 root 2. F upon 2 root 2, and this thing is minus of I cap minus of J cap. That's your vector form. अगर आपसे F टोटल पूछा जाता, मैग्नीट्यूड, तो जब भी इस फॉर्मेट में होते हैं, किस फॉर्मेट में? जब भी कंपोनेंट्स की बात होती है तो कंपोनेंट्स के बीच का एंगल क्या होता है? 90। अगर सेम मैग्नीट्यूड कंपोनेंट्स हैं 90 पर, तो आपको पता है एफ टोटल निकालने का तरीका सीधा सीधा क्या हुआ करता है? √2 टाइम्स दैट कंपोनेंट, √2 टाइम्स। ये खतरनाक चीज है नहीं? What is the length of this blue line? Length of this blue line, look at this right angle triangle. What is length of this blue line? Square. That gives you what? √2 F dash. Now what's the value of F dash? F dash कितना है अपने पास? F plus F upon 2 √2. Multiply √2 inside and you get what? √2F plus √2 and √2 cancelled, which is F upon 2. √2F plus F upon 2. √2F plus F upon 2. This was your first method. अगर केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता, केवल मैग्नीट्यूड, तो ये सब नहीं करना है। केवल मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करेंगे? F by 2. इन दोनों F को ग्रुप किया, we got what? √2F. This √2F was already present in the direction of F by 2. दोनों को ग्रुप किया, ये निकल आया मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर डायरेक्शनल पार्ट चाहिए, डायरेक्शनल पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो F by 2 था, इस F by 2 को I और J इसमें क्या करना होगा? रिजॉल्व। That's what we did. F by 2 को रिजॉल्व किया है I और J में। जैसे ही रिजॉल्व किया, this I groups with this F, this J groups with this F, giving you this setup. Where F dash, and then you can write minus I and minus J. Minus I and minus J. This is this, which is, अगर मैग्नीट्यूड चाहिए वेक्टर फॉर्म की हेल्प से ही, तो क्या किया हमने? F dash
Magnitude will be what? Root 2 times f dash. Ultimately you arrive same answer. Hopefully समझ में आ गई होगी कहानी. Note down this much.